सब ठीक बा, ठीक नहीं के बा? I am absolutely fine. I am absolutely fine. कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई सर? Always good. Have you all received that particular document? So if you have received, so have you all planned regarding that how to study and how to prepare? Planning करा या नहीं करा? बताओ. अभी तक नहीं, क्यों? बताइए. चलो, so you all will plan in future. नेक्स्ट ईयर ही देना है ना. अभी देखो आप लोग को अभी एडवांटेज था. टुडे इज 27th, right? So you have few days in your hand. Okay, so that you will plan it accordingly, and from 1st September you will start executing the same. Isn't it? So kindly do it. Okay, make the plan in detail, in a proper way, in a proper fashion. ठीक है? And that will be good. ठीक है, अच्छे से प्लानिंग करिए. है ना? चलो. So what was the last thing that we have discussed? कल हमने क्या डिस्कस किया था? ARC सरफासी एक्ट ना. We are done with the surface. Okay. Now, see, the thing is what? There are certain challenges also. Okay, regarding the surface act. कुछ इसके ना challenges भी हैं surface act के. And due to that particular challenges, the new act came into picture. Okay, just because of the challenges that were having, that India was witnessing under the surface act, there was the emergence of one particular new thing called as Fugitive Economic Offenders Act. Okay, it came into 2018. ये important नहीं है. याद रह गया अच्छी बात है, नहीं याद रह गया बहुत अच्छी बात है. ठीक है, not at all important. So उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है. Now see. So why this particular concept came into being? क्यों आया ये fugitive economic offender का जो concept है? Why this particular concept came into picture? है कि नहीं? So see, for example, why you all started? How many of you are engineer here in this particular class? कितने लोग इंजीनियर हो इस क्लास में? आप सबको तो पता ही होगा ना आपस में. आप हो, दामिनी, सहिती, सिंधुजा, और कौन है इंजीनियर इस क्लास में? और कोई नहीं, बस इतने ही. सबना. ओके, तो इंजीनियरिंग किए. बाकी कोई और प्रोफेशन के हैं? डॉक्टर कोई है? डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है. डॉक्टर वाले लोग अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ते हैं जनरली. बहुत कम ऐसा देखने को मिला है ना? और अब तो कबीर सिंह मूवी आने के बाद तो लोग अब छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, है ना? तो ये भी है. तो इसका अलग ही स्वैग है कबीर सिंह मूवी का. जस्ट लाइक after watching Gangajal movie, there are many people who have qualified the UPSC and they took IPS as their first preference. ठीक है, गंगाजल मूवी ने बहुत सारे लोग को IPS ऑफिसर बना दिया. Okay, so now the Kabir Singh, now we have the many young kids who want to become the doctor.
पूरा एमबीबीएस, जैसे उनको लगता है कि लाइफ ऐसी ही है, जस्ट लाइक मूवी, है ना। एनीवे, तो एनी अदर प्रोफेशनल हियर, एमबीए वाले या फिर कोई और प्रोफेशनल है इस क्लास में, या सब हमारे ही जैसे हो, मतलब मेरे ही जैसे एकदम कुछ नहीं, बस जन्म लिए, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई किए और फिर बचपन से यूपीएससी की पिपड़ी बजा रहे हैं, बाकी सब वैसे ही हो। अच्छा, लॉयर भी है इस क्लास में, चैत्रा यू आर लॉयर, एंड हाउ इज योर हेल्थ नाउ? तो पक्का से लॉयर हो ना चैत्रा? अगर पक्का से लॉयर हो तो एक दो मर्डर किया जा सकता है फिर, है ना। क्योंकि केस तो लड़ ही लोगे। ओके, ऑलराइट, दैट इज द साइड इफेक्ट, दैट विल बी देयर, गेट वेल सून, है ना। केस लड़ने अब तुम्हारे भरोसे मैंने एक दो प्लानिंग भी कर ली कि किसका किसका करूंगा, है ना। तो अब तो जल्दी से ठीक होना है आपको। चलो, सो गेट वेल सून सो दैट यू कैन नेक्स्ट ईयर। क्यों नेक्स्ट ईयर? तो फिर अच्छा, ये अभी, अरे यार अभी मतलब ये बोलो ना कि पढ़ाई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं हम लॉयर, हद है। अब इतने इतने इमेजिनेटिव आइडियाज आ चुके थे अभी तक मेरे माइंड में कि चलो इतने लोगों का करना है, इस तरीके से मर्डर करेंगे, है ना, फिर केस जाएगा। अरे तो पूरा बताना चाहिए था ना। इसको शुद्ध देसी भाषा में बोलते हैं धोखा, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, अब अगले साल प्लानिंग करेंगे। अभी लिस्ट बना लेता हूँ मैं बैठ करके पूरे एक साल। Who is PM here? Okay, your family is full of advocates, Subra. That's good यार। यहाँ पे तो फिर तो मैं एक नहीं बहुत सारे लोगों को निपटा सकता हूँ फिर मैं। हाँ, I have the full backup, पूरा बढ़िया। कोई जज वज नहीं है? जज वज हो जाए तो और अच्छी बात है। I have few friends जो जज हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत होते हैं ना, मतलब वो तो, चलिए तो ठीक है, बढ़िया। एनीवे, तो हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा ना। सो पीपल लिविंग engineering, people living practice, okay, there must be some reason behind it, positive reason or negative reason, any reasons could be there. Okay, so similarly there were certain reasons, okay, there were certain challenges. Okay, so there were certain challenges, there were certain reasons behind it, ठीक है, कुछ challenges थे, कुछ reasons थे। So what were those challenges, what were those reasons? ठीक है, देखो हर चीज में वाई लगाना जो आप लोग लगाते हो, और मुझे ये बैच इसलिए अच्छा लगता है ना, कि हर क्वेश्चन पे वाई लगाते हो और जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हो एकदम, ठीक है। नाउ सी, so what was those reasons? So there were certain challenges of SYLLABUS Act. What was those challenges? देखो ये challenges जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, this is not mentioned in your notes, and to be frank guys, maximum thing that we have discussed ना, okay, तो इसमें से कुछ चीजें हमारे नोट्स में मेंशन नहीं, कुछ चीजें आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, इन सारी चीजों में जो हमने डिस्कस किया, सो कीप मेकिंग नोट्स, ठीक है। इन सारी चीजों का अगर आप नोट्स साथ ही साथ बनाते जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। क्योंकि see the thing is, what theoretical perspective I have already covered in your PPT, in your notes, that will be there, okay, but I'm also covering from the current angle, I'm taking the current angle plus the analytical thing, okay, जो आपके मेंस में काम में आएगा। एनीवे, तो साथ साथ नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, और इसका भी लिख लेना, द चैलेंजेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक। नाउ सी, व्हाट वाज द फर्स्ट चैलेंजेस रिलेटेड टू द सरफासी एक्ट? सरफासी एक्ट से रिलेटेड सबसे पहले चैलेंजेस क्या थे? What people used to do, people simply used to take the loan, okay, from the bank. For example, Vijay Mallya एग्जाम्पल ले रहा है ना, विजय माल्या को तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो विजय माल्या फॉर एग्जाम्पल, ठीक, लोन उसने लिया,
इंडिया में। प्रॉपर्टी कहां पे बना ली उसने जाकर के? इंग्लैंड में। ओके, सो विल यू बी एबल टू कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड? क्या कॉन्फिस्केट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू डू दैट। व्हाई यू वोंट बी एबल टू डू दैट? बिकॉज़ देयर इज नो प्रोविजन एज सच। यहाँ पे तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज दैट यू विल फेस। मेनली देयर वाज द ज्योग्राफिकल चैलेंजेस। ठीक है, domestic only, and there was domestic challenges also. Within domestic also na, there were certain challenges that we will discuss. Mainly the geographical challenges was there in the Sarfasi Act. Okay, तो geographical challenges थे। अब देखो तो geographical challenges में इसमें क्या थे, और now see, if you are committing any default, if you are being defaulter, okay, in Noida, ठीक है, अगर आप डिफॉल्टर होते हो नोएडा में, केस कहां पे फाइल होगा बताओ? केस विल बी फाइल्ड इन यूपी नोएडा। नोएडा के कोर्ट में फाइल होगा केस। ठीक, बट इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन फॉर एग्जांपल बिहार, बिहार में दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेस कौन सा है? विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ दिस वर्ल्ड? बताओ। अरे इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर, within India, India एक थोड़ी ना। So the most beautiful place of this planet within India, that is within India, that is Samastipur. Okay. So this is the most beautiful place. ठीक है? Yes, absolutely. This is my home district. ठीक है? बहुत ही beautiful है। आप रोड पे चलोगे तो आपको रोड और गड्ढे का फर्क पता नहीं चलेगा। ठीक है, यू नो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है ये। ओके, इतना मतलब ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप मतलब बिना ये किए हुए बिना पैसे दिए हुए फिश खा सकते हो। ठीक है, तो इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ये। एनीवे, सो नहीं लिटरली रोड तो काफी अच्छा है, बट यस दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हैव यू हर्ड अबाउट द पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? सुना है? नहीं सुने होंगे, सुना है ना? वेयर इट इज? इट्स इन समस्तीपुर। यहाँ का एक मिठाई काफी फेमस है, बहुत सारी चीजें फेमस है। सो दिस इज द मोस्ट beautiful place. Anyway, so suppose that you have committed you are being defaulter in Noida UP, but your business, you are running a business in the Samastipur। ठीक, समस्तीपुर में चले गए हो तो केस कहां पे चलेगा? नोएडा में चलेगा। ठीक, सो द नोएडा अथॉरिटी विल नॉट बी हैविंग एनी जुरिस्डिक्शन इन द समस्तीपुर एरिया। इनके यहाँ पे कोई जुरिस्डिक्शन एरिया नहीं होगा। ओके, दे कैन नॉट गो देयर एंड विल फंक्शन देयर। ये यहाँ पे जाकर के फंक्शन नहीं कर सकते। देयर वाज नो प्रोविजन एज सच। Okay, so there was no concept of nationalization. There was no concept of convicting the defaulter at a national level. ठीक है, नेशनल लेवल पे कन्विक्ट करने का कोई प्रोसीजर ही नहीं था, कोई प्रोसेस ही नहीं। समझ रहे हो? सो दिस वाज द चैलेंज अंडर द सरफासी एक्ट। ये था चैलेंज हमारा सरफासी एक्ट के अंदर में। ठीक, यस कांची। So first challenge was कांची, आप not 2 able किलोमीटर दूर से क्यों बोल रहे हो? Yes sir. आप 2 किलोमीटर दूर से क्यों बोल रहे हो? No. Sir, first challenge was ARC won't be able to confiscate property of the person, like if he left India. Yes. Okay. And second was means I didn't get second one. That's some. The second was that if a person is convicted, is guilty in Noida, okay, but running a business in Samastipur. Suppose that you are having a business, you have taken loan from the Bank of Noida, okay, but you are running your business in the Samastipur, okay, Bihar. So the Noida authority will have no jurisdiction in Samastipur district. वहाँ पे किसका राज चलता है? वहाँ पे समस्तीपुर का राज चलता है, मतलब वहाँ के अथॉरिटी का राज चलता है, right? So that is the thing. So the Noida authority will have no jurisdiction there. So there will be again the issue related to the jurisdiction. So outside country,
outside jurisdiction issue is also there. Within the territorial boundary of India, jurisdiction is also there, right? So both challenges were there, especially under the surfacia. उसके अंदर में ये दोनों challenges थे, ठीक? So this was the thing. Third thing was there was no clear-cut picture that whom you will consider as an offender. आप किसको offender कहोगे? There are many people who are not able to repay the loan just because of certain challenges, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं challenges की वजह से, like farmers. अच्छा एक बात बताओ, कल आप लोगों ने कोई there was someone from Maharashtra ना, इस क्लास में है ना कोई महाराष्ट्र से या नहीं है? नहीं हो? कल महाराष्ट्र का न्यूज देखा है आप लोगों ने? नासिक का फार्मर्स क्या कर रहे थे? टोमेटो को रोड पे फेंक रहे थे कल, ठीक है? अपना सोशल मीडिया ओपन करना, वहां पे ये सारी चीजें दिखाई देगी. व्हाई? बिकॉज द प्राइस ऑफ टोमेटो फेल बिलो 2 रुपीस पर केजी. अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि 2 रुपया पर केजी बनने से क्या हुआ होगा? I am saying that in our yesterday there was one scene in the Nasik district of Maharashtra that the farmer was just simply throwing away the tomato on road. Why? What was the reason? Because the price of tomato fell down at 2 rupees per kg. ठीक है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा. मान लो क्यों समझ में भी नहीं आया होगा. Yes, definitely. तो इसके इम्पैक्ट समझ में आ रहे हैं. Can you recall that? Can you answer that? What would be the impact? क्या आंसर कर पाओगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बस yes या no बोलना. मुझे पता है यार आप लोग ईमानदार हो. I know that. आंसर कर पाओगे? हो पाएगा आंसर? नहीं कर पाओगे? Why सिंधुजा? Farmers in debt trap. पूरा इन्फ्लेशन भूल गए. Less demand, yes. Why you won't be able to answer? अच्छा, तो मस्ती कर रहे थे. So you are having fun, हाँ? चलो पहले no बोलेंगे, फिर hi, फिर yes बोलेंगे. How this will be tackled? Sabna, it's you who have to answer me how this will be tackled, because we have already discussed. ना? ये तो आपको ही डिस्कस करना है. Without RBI. सीआरआर एसएलआर को कितना लेकर के जाओगे नीचे? बस यही तक सोच रहे हो. Why you are thinking only from the monetary policy perspective? Just draw a larger perspective. We have कितने classes हुए हमारे इकोनॉमी को? More than 40, isn't it? More than 40. We are done with more than 40 classes. 40 classes में कितने? Almost we are done with 60 classes, 60 hours. 60 hours के करीब तक तो हो ही गया होगा ना, है ना? तो इतना टाइम. And you know one thing, in previous batches or in few batches I used to complete the entire economy in these hours. ठीक है? In this particular class I am going in deep because you guys are asking questions पूछ लेते हो आप लोग. ठीक है? So this is the thing. So इसके beyond मत जाओ. मेरा कहने का मतलब ये है, I simply want to say, and this is my expectation actually, that you guys should think from broader perspective.
है ना, आप लोग को तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए, जस्ट थिंक फ्रॉम मल्टीपल थिंग, यस थिंक फ्रॉम द सब्सिडीज पर्सपेक्टिव आल्सो, है ना। नाउ सी जस्ट इमेजिन इफ द फार्मर्स आर थ्रोइंग, ठीक, फॉरगेट दैट यू नो एनीथिंग, ठीक है, भूल जाओ कि कोई इकोनॉमी पता है, जस्ट हैव अ कॉमन सेंस, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोचो बस। देखो इफ फार्मर्स आर थ्रोइंग, ठीक, व्हाट इज द रीजन, रीजन इज प्राइस इज टू लो, ठीक, that is the reason. So how you will boost, so if the price will boost it up, okay, then the demand will come, तो आप क्या करोगे। so देखो why price has gone down, आपको ये चीज पता होना चाहिए, प्राइस क्यों नीचे गया है, because demand is less, supply is high, बताओ, ठीक, this is the reason. now just do the reverse, ये आप क्या करो, रिवर्स कर दो, जस्ट गो फॉर होल्डिंग। होल्डिंग याद है, होल्डिंग में क्या होता था, व्हाट यूज्ड टू हैपन इन होल्डिंग, क्या करते थे होल्डिंग में, बिल्कुल स्टॉप करके रख लेते थे और उसके बाद sell for higher prices. Now just imagine, so here what should be your first objective in this scenario, your first objective is to reduce the supply, है ना, सप्लाई को रिड्यूस करो, सप्लाई को रिड्यूस करने के तो मार्केट में जो आपने लेकर के रखा है कमोडिटीज को, ठीक है, उस कमोडिटीज को आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिड्यूस इट, कोल्ड स्टोरेज में डाल दो, ठीक, just reduce that particular thing, okay। now if you will reduce the supply, automatically there will be more the demand and supply will cool down, and at some point of time it will start matching, ठीक है, ये जाकर के मैच करने लग जाएगा, ठीक है। so the problem that we faced yesterday, the problem the farmers faced yesterday, okay, regarding falling down of the tomato prices, that won't get hurt, okay। how long, see, it's just a matter of some time, definitely it is going to take time, because it is not that just because of only one individual or one particular person the price has gone down, okay। so in order to have a broader perspective, in order to make it down at a larger, from the larger frame, so you have to give the time, okay, there is no other option, it will take hardly 1 month, isn't it, it may take 1 month, but after 1 month, if when the things gets normal, then the price automatically would skyrocket, है ना, so that is the thing that will happen, yes sir। Regarding this perishable substances, it will be this is a perishable good, definitely it's a perishable good, for that reason so we need a prior vision to it, no, we have, for that reason only we have cold storage, but they might be yes, they might be doing it, yeah, what they might be filling it, yeah no, they are keeping the tomatoes on road just because they don't have such provision, access, yes, definitely the access, the we do not have much cold storage facility, this cold storage facility is lacking there, okay, so that is also one of the reasons, so this is so then government can do anything regarding this, definitely government, level, definitely this is the responsibility of the government, okay। and now see, Nasik is what, Nasik is a big market of agricultural products, okay, so there we have to restrict the accumulation of these products, so once the accumulation of these products will get, if the import, not accumulation but the import of these things should be restricted, okay, people are going there, people are keeping their products there, selling products there, okay, so these things has to be restricted, not restricted but regulated properly, okay, so this is the thing, so with proper regulation, you will be able to reduce the supply side, and once the supply side comes down, definitely it is going to have an impact on the demand side,
ओके एंड द प्राइस वुड गो अप। सो ये सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगा फिर, ठीक है। Yeah, definitely. Undoubtedly, undoubtedly. Very good. That's a very good answer. Okay, in that scenario, we can increase our export. है ना? We will provide export subsidy. हम export subsidy देंगे कि जाओ जाओ भेजो, इस देश से बाहर भेजो, है ना? ठीक है, अफगानिस्तान में जाकर के भेज दो। And you know one thing, that's good, Sindhuja. We can do also one thing. Okay, have you heard the name of mega food parks? Mega food parks, very good. Why mega food parks concept scheme has come up? Why it has come up? बताओ, बताइए। Direct connection with whom? Between farmer and market. See, mega food park scheme has maybe come out. Okay, under this particular thing, the farmers' produced goods could be converted into another manufactured goods. ठीक है? For देखो लेज खाते हो, लेज खाते हो कि बहुत अच्छा लगता हो, है ना? एक बात आप लोग मुझे बताओ जरा, अगर सपोज दैट, जस्ट इमेजिन दैट यू आर अ फार्मर and you are having you have recently grown potato, आपने पोटैटो ग्रो करा है, ठीक, रिसेंटली कोई आएगा और आपको बोलेगा 2 पोटैटो मुझे दे दो, क्या आप उससे पैसे लोगे? बताओ, लोगे क्या पैसे? कोई 2 पोटैटो लेकर के जाएगा? नहीं लोगे, आई एम श्योर नहीं लोगे। इतनी इंसानियत तो है तुम लोगों के अंदर में। ओके, बट इफ यू आर रनिंग अ शॉप and suppose that anyone has come up and asked you to have lays, ठीक है, लेज के लिए कोई आया है, तो क्या उसे फ्री में जाने दोगे? लेज में होता ही कितना है, बस थोड़ा सा, है ना? तो you will take money for that, isn't it? So this is the difference. Okay, so that is under the mega food parks that the government is planning to convert the farmers produced goods into a developed one, into another product. तो अगर हमारे पास excessive tomato, okay, so we can convert the tomato into tomato ketchup. ठीक है, आप इसे टोमेटो केचप में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो by doing something, ठीक है, इससे और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा, ठीक है, और इसको आराम से आप चिकन पे लगा के खा सकते हो, ठीक है। वैसे चिकन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी ओके, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। आप लोग तो घास फूस वाले हो, है ना, तो घास फूस पे भी इसको यूज कर सकते हो अच्छे से। सो दिस कैन बी कन्वर्टेड। अब देखो, फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो ऑफेंडर्स के बारे में तो हमने पढ़ा। सो दिस वाज द चैलेंजेस, ओके, सो दोस वर द चैलेंजेस रिगार्डिंग द सरफासी एक्ट, ठीक है, वो सारे हमारे उसके चैलेंजेस थे। नाउ तो हमें पता ही नहीं था, वी वर नॉट एट ऑल अवेयर, राइट, दैट whom we consider as an offender, हम किसको ऑफेंडर मानते हैं, हम किसे कंसीडर करते हैं, हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन, और बहुत सारे लोग, many people started doing, people started taking loan from the bank, okay, they did not used to repay the loan and they simply used to leave the country, देश छोड़ करके भागने लग गए थे। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या,
Nirav Modi, Mehul Choksi. Okay, so these were the people who used to take the loan and they used to leave the country, okay, and used to go out. So that was the situation that erupted, that emerged during that particular time period. ठीक है, तो वो एक situation हो गया था उस time period में. ठीक, now see, so for that reason, in order to deal with those situation, in order to deal with that particular condition, the government of India come up with the new legislation under budget 2018 to 19. Take the government of India introduced the concept of fugitive economic offenders under budget 2018-19. ठीक है, इस चीज के अंदर में गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, fugitive economic offenders. Now see what happened. Okay, so under this particular act, for the first time, the name of fugitive economic offender was introduced. ठीक है, सबसे पहले किस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया? सबसे पहले बताया गया that who is an economic offender. हम किसे बोलेंगे इकोनॉमिक ऑफेंडर? ठीक है, कौन कहलाएगा इकोनॉमिक ऑफेंडर? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू. Okay, now see, so कौन है हमारा fugitive economic offender? So fugitive economic offender is a person who have left the country, okay, and against whom arrest warrant has been issued. See, there are various key points, okay, and you need to understand. So it's a person. Person means what? Individual, क्योंकि group के against issue नहीं होगा. So it's a person, individual, ठीक, left the country, okay, then refused. Thank you here. Refused to come to the country. ठीक, जिन्होंने देश छोड़ दिया, okay, again left the country, refused to come to the country, and against whom arrest warrant has been issued. ठीक है, ठीक है, तो कौन है ये वो लोग हैं. Fugitive economic offender are those people, you know, those who have left the country, they have refused to come to the country, and against whom arrest warrant has been issued. ठीक है, जिनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू किया गया है. ओके, व्हाट अबाउट ग्रुप देन? व्हिच ग्रुप सपना? Sir, I mean group of 2 or 3 or group of many. If they have done the same thing, then what is the provision? So in that particular situation, if everyone has collectively, this is what that you are asking, if collectively they have done that, so in that particular situation also they will be considered, okay, and individually they will be considered as fugitive economic offender. ठीक है, चलो, so they have, you know, so this is the thing, this is the definition. Repeat what, Kanchi? I need to repeat this particular thing, fugitive economic offender definition. Sabna asked that what about the, you know, people who committed the same crime in a group. Okay, they have taken the loan in a group. So first of all, if they have taken a loan, so first of all, you know, loan cannot be issued in the name of a group. ठीक, एक ग्रुप के नाम पर तो लोन इशू नहीं होता है, पहली चीज ये. सेकेंड चीज इज दैट अगर मान लो उसने अपने कंपनी के नाम पे लिया है, ठीक, if a person has taken a loan, okay, in the name of company. देखो ये काफी अब मैं डिटेल में थोड़ा जा रहा हूँ in order to explain this particular thing, okay, तो उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट फिर भी okay, तो प्लीज रिमेम्बर कंपनी ओनर, ठीक है, कंपनी के जो ओनर होते हैं और ठीक है, और जो कंपनी होती है, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी.
ओके, बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होंगे। ओके, सो कंपनी के नाम पे, और ये कंपनी है तो इस कंपनी को सपोज करो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके चला रहे हैं। ओके, two group of people are running, for example, this particular company. Okay, now if the group of people are running this particular company, then they can take the loan. ठीक, अब separate legal entity अगर है, if the group of people are separate legal entity, okay, so in this particular scenario the case will be registered against the company, not the owner. ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट में नहीं होगा, ओनर के अगेंस्ट में ये होगा, केसेस होगा। ठीक है, व्हाई? बिकॉज द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अलग से लीगल एंटिटी होता है, कंपनी के नाम पे भी पैन कार्ड इशू होते हैं। ठीक है, कहां पे ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है? वेयर इट कैन बी एप्लीकेबल, इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन इफ अ फर्म इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। ठीक है, if any firm, if any business is based on partnership. So in this particular situation, the partners have the unlimited liabilities. Matlab, in this particular scenario, partners and business won't be separated, they will be same, and if they have taken the loan together, so individually they will be considered as, okay, fugitive economic offender. ये थोड़ा डिटेल में और डीप में जाकर के मैंने बताया है। ठीक है, थोड़ी अकाउंटिंग प्रिंसिपल ला करके, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना आपको जानने का जरूरत भी नहीं है, कंपनी में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सब इतना जानने की जरूरत भी नहीं है। देखो, सी द लास्ट पॉइंट इज दैट इफ देयर इज अ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, ओके, द partners and company both are, the business, they are not individual, they are the same. जो बिजनेस का है वो पार्टनर का भी है, जो पार्टनर का है वही बिजनेस है। ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो दे कैन बी हेल्ड लायबल। ओके, ठीक है। सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया सबका? ओके, चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? या डेफिनेटली under the partnership firm, personal asset can be confiscated. Okay, because partners are liable to pay. But in case of company, it won't get confiscated. Okay, अब मान लो जियो है ना, और मुकेश अंबानी, जियो ने किसी का पैसा खा लिया, इसका मतलब वो जियो रिटर्न करेगा, मुकेश अंबानी नहीं। ठीक है, मुकेश अंबानी लायबल नहीं होंगे। कौन लायबल होगा? जियो लायबल होगा। ओके, क्योंकि जियो इज अ कंपनी। ठीक है, all right then. What is the next thing that we are having? ठीक है, now what if we have declared a person as fugitive economic offender? Okay, so even if we have declared a person as economic offender, then what are the why they should feel sorry, and how we will be able to get our asset back? ठीक है, what is the main purpose behind bringing this particular legislation, behind bringing this particular law? मेन पर्पस क्या है इस लॉ को लाने का, इस लेजिस्लेशन को लाने का? So the main purpose to get this particular law, to get this particular legislation is to what? Undoubtedly is to recover the loan, है ना? So the recovery of loan is the main purpose. ठीक? So how you will recover? So first person, yeah, to solve the NPA issue.
So the first thing under this is that, see, first of all, that the banks, they will be empowered to confiscate the property of offender which is not only in India but also outside India. ठीक है? ठीक. So जो हमारे offender होंगे, so the offender, economic offender would, would get definitely the ये इनके अगर प्रॉपर्टी सपोज करो ब्रिटेन में है, ठीक है, या फिर किसी भी XYZ कंट्री में, ओके, सो द आवर बैंक्स वुड बी एलिजिबल टू कॉन्फिस्केट दैट प्रॉपर्टी आल्सो. उस प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है. देयर वोंट बी एनी इशू, कोई इशू नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. समझे या नहीं समझे? इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ, यहां तक क्लियर होगी? नाउ सी, द पर्सन, ओके, who will be considered, who will be declared as fugitive economic offender, they will lose their civil rights. Now answer me one thing, what do you understand by civil right? सिविल राइट्स का क्या मतलब होता है? बताओ, पॉलिटी पढ़े होंगे. Political and social rights, definitely. Now see, civil means what? This particular word civil, okay, this particular word civil comes from citizen. Okay, so those who are citizen of India, they have certain rights, isn't it? As a citizen of India, they possess certain rights. No, इनके पास तो कुछ rights होता है. What are those rights? Right to education. Take other fundamental rights. Take other rights that you can move freely anywhere, and for that you don't need any permission. If any foreigner has to visit India, so they need permission ना, उनके तो permission चाहिए, है कि नहीं? But for you, do you need permission to come back to India? क्या आपको permission चाहिए इंडिया वापस लाने के लिए, आने के लिए? नहीं चाहिए. स्वदेश मूवी देखा है ना? स्वदेश मूवी में शाहरुख खान गया था क्या परमिशन लेने? नहीं गया था ना, है ना? Oh, I forgot. You guys don't watch movies and all. ठीक है, how can I forget that? Anyway, so those who will be declared as a fugitive economic offender, they will lose their civil rights. जो civil rights हैं वो क्या हो जाएंगी खत्म, finish. ठीक, so that is the situation that will come up. तो ये हमारी हो जाएगी civil rights. No, they will not have any particular civil rights. Now see, what is the another thing that they will have, and what is the another thing under this particular thing? बहुत अच्छे जान भी. A special court will be set up. Think why? Another reason why a special court will come up. Why there is a provision of a special court in it? हाँ, so उससे क्या होगा हमारा? बताओ. रिकवर the assets quickly, very good, है ना? They will be able to recover. अब एक बात बताओ ना, we all know, we all are aware about the procedure code of the court, है ना? We all know fully that how efficiently our court works, है ना? कितना efficiently हमारा court काम करता है. Why? Because there is a lot of pendency of cases, है ना? तो इसमें भी अगर पाइल अप केसेस अगर पाइल अप होते चले जाएंगे, that won't be good ना. वो तो फिर अच्छा नहीं रहेगा. पाइल अप होना तो अच्छा नहीं होता. Definitely there already is the so much of pendency of cases, है ना? केसेस तो हमारे बहुत ज्यादा पेंडिंग में है.
ठीक, तो पाइल ऑफ थिंग्स विल नॉट बी गुड अंडर दिस। अब देखो क्या है इसके अंदर में, नाउ सी, so unless and until if you will not come up with a dedicated code, okay, who will look after these cases only, then they you know the efficiency of the justice would increase। ठीक है, तो जिसको भी जस्टिस मिलना है, जस्टिस would increase। ठीक है, you know justice delivery will be done। there is one famous quotation ना, justice delayed is justice denied, है ना, हमने सुना है ना। ठीक, so this would you know we can change this particular mindset, we can change this particular thought process because there will be a designated court। ठीक है, एक तो अलग से हमारे पास कोर्ट ही रहेगा ये सब करने के। What is the another thing under this particular thing? इसके अंदर में और अलग चीजें क्या है, तो इसके अंदर में है that a special director would be appointed। ठीक, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में होगा there will be the appointment of special director। Now what will be the role of the special director? So the responsibility, the role of the special director would be to you know to monitor the situation, to regulate the entire process, okay, to manage each and everything। ठीक है, सारी चीजें मैनेज करना will be the role, will be the responsibility of the directors। Okay, so for that particular purpose special directors would be appointed। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बताओ। Alright, now functions क्या होंगे, what would be the functions, what is selection committee, सबना। So you had told that one selection committee will be there to watch over them. To watch here in NPA? Yes, sir, in FEO regarding that center. Forget economic of interest, selection committee नहीं बोला था मैंने, बोला था special director। Okay. Okay, special director would be there, special court would be there। ठीक है, तो functions क्या क्या होंगे, definitely। Now see, the thing is what, सबसे पहले special court क्या करेगा, that will be the responsibility of the special court to issue arrest warrant first of all। ठीक, ये क्या होगा, ये अरेस्ट वारंट इशू करना will be the responsibility of the court। ठीक है, ये हमारे कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी होगी अरेस्ट वारंट को इशू करना। Okay, so this is the first thing। Yeah, yes sir। Actually, where's the special court located now, and who's the special as of now Delhi, principal bench is in Delhi। Okay, okay, chalo, there is another thing that special court would also declare a person a fugitive economic offender। So once the arrest warrant has been issued, okay, so after issuing this particular arrest, yeah, that is Delhi only। Okay, now see, so the you know once the arrest warrant has been issued, okay, so after that you have to declare if they are not coming back, so you have to declare na that this particular person has become the FEO। Okay, so the declaration regarding the FEO would also be done by whom, would also be done by the special court itself। Okay, so that is also one of the things related to it। And the special director, this special director, definitely this special director would be responsible। ठीक है, ये स्पेशल डायरेक्टर जो होंगे ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये स्पेशल डायरेक्टर हमारे रिस्पॉन्सिबल होंगे सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली, दिस इज यू नो रिलेटेड टू आवर मैनेजमेंट। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, so this is the thing, this is the process or this is the procedure under this fugitive economic offenders act। okay, तो क्या क्या हो गया हमारे fugitive economic offenders act के अंदर में,
So the first thing under this particular act is that those who are FEO, Fugitive Economic Offenders Act, it came due to the failure, okay, of the SARFAESI Act. सबसे पहली चीज ये है, due to just because of the challenges of the SARFAESI Act, this particular thing came into picture. ये चीज हमारा पिक्चर में आया. What is the second thing related to it? दूसरा चीज क्या है हमारा इस चीज से related? So the second thing is that after coming the FEO, the banks were empowered to confiscate the property, which is not only in India but also outside the country. जो इस देश से बाहर है ना, उसके लिए भी ये confiscate कर सकते हैं property. ठीक है? So that is the main important aspect. One Yes, more thing, yeah. I don't know about it. That's why whether all those properties are confiscated now. Those who went. Those who went out. Yeah, it was Now see, like, yeah, they have written off. Under this particular thing also, na, there is a challenge. There are challenges. ठीक है, इसके भी there is challenge of fugitive economic offenders also. मैं आज आप लोग को जल्दी छोड़ दूं, चल जाएगा? Yes. Sorry, sir. Just a quick question. So, Yeah, please. okay. So, these fugitives, their companies, whatever company they own, what happens to the employees? Like when they are not paid, as seen in the case of Vijay Mallya, the employees weren't paid, right? So when their properties and everything is confiscated, the operations are stopped and everything. So what happens to the employees? Like, are they paid by the bank? Absolutely no. Why bank would pay? Yeah. So what happens? ठीक है, nothing happens to them. Okay, they have to switch their job. Okay, these are the risks, that is attached with the private sector. Okay, so they become the jobless definitely. Okay, so nothing happens with them. They have to search. They have to prepare for UPSC. Okay, so this is the thing. Chalo, now. अब देखो हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग, इसके चैलेंजेस क्या है. व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर? सबसे पहला चीज, आपने इशू कर दिया दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज बिकम द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? मेनी टाइम्स व्हाट वी आर सीइंग दैट पीपल हैव लेफ्ट द कंट्री. मतलब जो लोग इस देश को छोड़ के जा चुके हैं, सो देयर कुड बी एनी XYZ रीजन, है ना, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर नॉट एबल टू कम बैक. ठीक, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहा है. And you have declared them the fugitive economic offender, and the moment you declare them as fugitive economic offender, so from that moment itself that individual, that particular person will become the enemy of the company. हो गया नहीं होगा बताओ? So from that particular person, that will be the thing, that will be the situation that would come up. Now see, अब एक बात बताओ, आपने डिक्लेयर कर दिया तो क्या ये आएगा फिर से वापस? ये आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा. क्योंकि क्या आपने क्या किया? सिविल राइट्स भी आपने इसके छीन लिए. ठीक, तो ये तो वापस भी नहीं आना चाहेगा. ठीक है. So this is the situation. This is the first challenge that we can face under the Fugitive Economic Offenders Act. इस एक्ट के अंदर में ये एक चैलेंज है जो अपने को फेस करना पड़ सकता है. ठीक है. What is the another challenge? See, it's not like that will never be. There is nothing such as never will be restored. What if they make the payment, right? After declaring, after some time, what if they make the payment? ठीक है. The first point is that the person who have left the country, we have declared them the fugitive economic offender, so definitely they will become the enemy. ठीक. तो और दूसरा हमने क्या किया है? We have we have simply snatched away their civil rights.
So as we have snatched away their civil rights, so they won't be interested in coming back to our country. ठीक, ये तो इंटरेस्ट शो ही नहीं करेंगे ना, ये तो हमारे देश में आएंगे ही नहीं वापस. So if they are not showing any particular interest, so that will be the problem. ठीक, वो तो फिर आएंगे नहीं तो हमारा लोन रिकवर होगा ही नहीं, पहली चीज ये. ठीक, what is the another thing? Another thing related to it is that we do not have any sayings in the internal affairs of other country. है कि नहीं? Do we have any sayings in the internal affairs of other countries? No, we don't have. है ना, हमारी कोई sayings नहीं है इनसे related. Okay. अब देखो, so if we do not have the sayings, any particular saying, so we need to sign what? We need to sign the treaty with the country. So the diplomatic efforts will be needed, है ना? Why would any country help? Answer, see Sabna, if you are strong, if you fulfill the requirement, if you fulfill the needs of other person, definitely the other person would help you, will be interested in helping you. This is the thing. Okay. So offender को, why not? If offender has invested in that particular country, for example Vijay Mallya has invested a huge amount in Britain. Okay, so whom Britain will help? Britain will definitely help the Vijay Mallya. Why? Because Britain has received heavy investment from the side of Vijay Mallya, right? So this is the thing. Okay, so we need to go for the diplomatic effort in order to set things right. Okay, diplomatic efforts will be needed. अगर आपने को चीजें सही से चाहिए तो, समझ रहे हो? So this is the thing related to it. This is the thing, na? Though we come up with this particular policy in the year 2018, है ना? What we are having 2021, है ना? So from last 4 years we are not able to get Vijay Mallya back. क्या हमने विजय माल्या को वापस ले आए? नहीं ले पाए, है ना? So that's why this is a challenge, this is a problem, because we do not have any sayings in the internal affair of other country. Okay. So by using, so this is the challenge, but by using the Fugitive Economic Offenders Act, okay, we will be in a position to confiscate the property to get our asset at a reasonable, है ना? Reasonable हो जाएगी फिर से. So is this clear? यहाँ तक समझ में आया? सबको क्लियर है? ओके देन. तो यार सी एक काम करते हैं, आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ आप लोगों को, ठीक है? So this is the thing. We will continue from the Monday onwards, है ना? हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे अपना, ओके, अपने टॉपिक को. ऑलराइट देन, डन फॉर द डे. थैंक यू सो मच. टेक एक्सट्रीम केयर. ठीक है, मिलते हैं मंडे को. ओके, बाय बाय.